So when an investor, wishes to invest in a business from a long-term perspective, and by long-term I mean 3 to 5 years perspective, and not 6 months or 1 year perspective, because as I know, among our retail investors, even 6 months and 1 year is considered as pretty long. So I'm talking about pretty long period, that is 3 to 5 years. So if a person is ready to invest for 3 to 5 years, then fundamental analysis becomes very important for that person. Otherwise, technical analysis is a very good tool which should be used for the short-term investments. But for long-term investments, fundamental analysis is the only tool which can help you actual creation of wealth. So let's try and understand what is exactly fundamental analysis. So as I mentioned, so today we'll consider, first we'll understand what is fundamental analysis, what are the tools that are required in fundamental analysis. Very basically, I'll just tell you about the basic few things that you should look into it, and then the few key important ratios that one should really understand for understanding a company. So let's start with fundamental analysis. So basically fundamental analysis एक टेक्निक है जो कि determine करता है आपके स्टॉक का ट्रू वैल्यू क्या होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन उसका फ्यूचर एक्चुअल में पास्ट में क्या हिस्ट्री था एंड फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स है. So clubbing both things together, we do the fundamental analysis. Now it sounds a bit complicated when you listen to the definition, but it's not that complicated. We can break it into few simple steps, and it can be done by anybody who has a basic financial knowledge. So जिसको भी थोड़ी बहुत financial समझती होगी या commerce background होगा, वो है ना कितने fundamental analysis easily कर सकता है. So as I mentioned कि fundamental analysis जब हमें long term अगर आप ये आप बात मानते होगे कि वेल्थ क्रिएशन एक्चुअली लॉन्ग टर्म में ही होता है. शॉर्ट टर्म में वी कैन मेक क्विक मनी, बट देन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. फुल टाइम आपको स्क्रीन के सामने बैठना होगा. सो इफ यू डोंट हैव दैट मच टाइम एंड एफर्ट, देन इट्स बेस्ट you do a long term investment. And in long term investment, अगर आपने सही स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई की है, then you would definitely make make good amount of profit from that script. तो wealth creation long term में definitely होता है, लेकिन you should have the skill to identify good companies. अब basically fundamental analysis क्या है? Fundamental analysis आपको कुछ questions के answer देता है. So whether company का revenue constantly grow कर रहा है कि नहीं कर रहा है, company constantly profit बना रही है कि नहीं बना रही है, is it in a very strong position, माने leadership position में है, या उसके products से niche product है, how's the management quality, corporate governance कैसा है, ये सब कुछ key parameters है जो आप study करोगे, you would be definitely able to identify few good companies which would help you make good money in the long run. अभी if I take the example, few examples आपने भी बहुत सुना होगा wealth create कौन कौन करता है, like for example Nestle, Maruti, Page Industries, TCS, Infosys, Davis. So ये सब long term wealth creation wealth create करने वाली stocks है. अगर आप उसमें 10 साल invested रहोगे तो आपके ना कहते माने ये सब stocks ऐसे stocks है जो कि हर 3 to 4 years में आपका पैसा डबल करके almost देते ही देते हैं. So इनमें how should we identify these companies, that is the topic. And इनमें एक चीज मैं आपको और बोलूंगी, ये वैसी companies होती है जिनमें कि definitely short term में ये भी volatile रहते हैं, कुछ ना कुछ कभी ऐसा event हो जाता है जिनके कारण इनके भी prices में ना एक short term blip आ सकता है. But then you have to if you do a good fundamental analysis, then you would be able to overlook these short-term noises, these short-term negative news, and you would be able to hold these stocks from a long-term perspective, जो कि आपका wealth create करेगा. अब जैसे अगर मैं नेस्ले का एग्जांपल लूँ, उसका मैगी का फियास्को हुआ था, अगर आपको याद होगा 2018-19 के वहाँ पे मैगी पे काफी कुछ एलिगेशंस लगा था. सो शार्प डिप आया था, बट देन उसके बाद वो 6 months में है ना कितने लास्ट किया होगा डिप, उसके बाद वापस स्टॉक ने काफी शार्प रैली किया. सो अगर आप कंपनी अगर अच्छी होगी ना, मैनेजमेंट साउंड होगा, फंडामेंटल स्ट्रांग होगा,
तो वो शॉर्ट टर्म न्यूज का इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट होता है एंड दे आर एबल टू लाइक यू नो बाउंस बैक वेरी क्विकली. सो आइडिया वही होता है कि हमें इस तरह की कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है. अब अगर मैं डिविस का एग्जांपल लूं, ये डिविस का आपको जो 2017 में ब्लिप दिख रहा है, शार्प प्लंज दिख रहा है, वो उस समय एक बार वो यूएसएफडी का कुछ अप्रूवल के कारण एक बार बहुत शार्प डिप आया था. 1 ईयर वो पूरा कंसोलिडेट किया, बट देन उसके बाद उसमें वापस स्ट्रॉन्ग रैली आया. सो आई एम नॉट सेइंग कि एकदम ये लीनियर ऐसा स्ट्रेट एकदम उनका लाइन होगा, इनमें भी शॉर्ट टर्म वेरिएशंस डेफिनेटली होंगे, बट देन इफ इट्स अ गुड कंपनी तो आपका वो ओवर द लॉन्ग रन वो डेफिनेटली मनी मेक करता ही करता है. सो डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आई एम नॉट सेइंग कि इट्स बैड और समथिंग, बट हमेशा एक है ना कॉम्बिनेशन होना चाहिए शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म का अपने पोर्टफोलियो में. लॉन्ग टर्म इज समथिंग जो कि आपको ना थोड़ा सा आप टेंशन फ्री होकर उसको होल्ड कर सकते हो. शॉर्ट टर्म में आपको कॉन्स्टेंटली इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एफर्ट्स. सो अब अगर आप क्वेश्चन शायद ये भी उठ सकता है कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. टेक्निकल एनालिसिस प्योरली आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ही आपको हेल्प करता है, या अगर आप उसको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ क्लब करना चाहते हो, आप पहले स्टॉक को आइडेंटिफाई करो फंडामेंटल एनालिसिस करके, and then what you can do is you can with the help of technical analysis you can try and time the entry into that stock, or after holding it for a very long period, if you for example if you want to like you know lighten your position in particular stock or something, so आप टेक्निकल चार्ट देख के आप थोड़ा सा एंट्री एग्जिट को टाइम कर सकते हो, बट देन लॉन्ग टर्म में टेक्निकल एनालिसिस डजंट हैव अ वेरी like you know a key role. Technical analysis is more of for a short term like you know profit and all, but yeah, for a long term period at least the entry part you can time it with the help of technical money. For example, if you like Page Industries, now should we enter at these levels or should we wait a little, that's the question. So for that आप है ना टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प लेके you can identify the level and then you can make the entry. अदरवाइज ऐसे तो लॉन्ग टर्म अगर आप इफ यू आर प्लानिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सो अगर थोड़ा हाई में भी बाय किया तो देयर इज नो इशू, बिकॉज जब व्हेन यू इन्वेस्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव व्हाट यू रियली डू इज you keep on like you know you don't put your money at one go. For long term investment it's always a staggered manner investment which is required. So आप हर थोड़ा लेवल्स पे अगर स्टॉक नीचे आता है तो आप थोड़ा उस लेवल पे डालो, या स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर भी जा रहा है तो आप थोड़ा हाई लेवल पे भी डाल सकते हो, बट इट्स लाइक इट्स अ स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग व्हिच इज डन फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सो ये मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दे दिया. नाउ लेट मी कम टू एग्जैक्टली व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, माने अब हम करते कैसे. सो देयर आर टू अप्रोचेस इन इट, वन इज टॉप डाउन अप्रोच, वन इज बॉटम अप अप्रोच. या टॉप डाउन अप्रोच में क्या है, या तो लाइक यू स्टार्ट विद इकोनॉमी देन इंडस्ट्री देन कंपनी. व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स इज like for example India, we know it's a booming economy, so if it's a fast growing economy then like you know we can start with a top down approach. So it's a good economy. Now in that what are the industries which are prospering in that economy, आप वो इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करो. जैसे अभी वी नो दैट ईवी renewables, these are the key themes which are playing out. या केपेक्स थीम, अभी बजट में केपेक्स को बहुत पुश मिला है, सो केपेक्स थीम इज प्लेइंग आउट. सो आप वो थीम को या इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करो, देन यू कम डाउन टू दी कंपनी लेवल. सो ये हो गया, पहले आप ब्रॉड से नैरो आप कैसे अप्रोच करो. अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज इफ like you know for example you read some interview of a management, or like you know I mean you came across some company which you found like really interesting, and you when you dig deeper into it you really like that company. तो फिर आप देखोगे कि वो किस इंडस्ट्री में है एंड उस इंडस्ट्री का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसा है फॉर नेक्स्ट 5 years, बिकॉज आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप है ना 5 years का पिक्चर लेके चलते हो. सो नेक्स्ट 5 year 10 years इज दैट इंडस्ट्री अ ग्रोइंग इंडस्ट्री और नॉट, आप वो आइडेंटिफाई करो. देन फिर आप इकोनॉमी देखो कि इकोनॉमी उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है. सो दिस इज अ बॉटम अप अप्रोच. आप है ना नीचे से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, कंपनी से आप इकोनॉमी की तरफ जा रहे हो कि whether economy will support the growth of that company or not. तो दोनों ही अप्रोच राइट है, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट अ वे ऑफ है ना. देखते हैं आपको आइडिया कहीं से भी आ सकता है.
आपको है ना कहते जैसे अभी आपने अगर बजट सुना, बजट से आपको कुछ आइडिया आया, तो फिर आप ग्रेजुअली है ना कहते टॉप डाउन अप्रोच लगाते हो, या आपको कोई कंपनी अच्छी लगी तो फिर आप बॉटम अप अप्रोच लगाते हो। तब कोई भी अप्रोच लो, आइडिया इज टू आइडेंटिफाई गुड कंपनीज। वंस आपने कंपनी आइडेंटिफाई कर ली, then there are two aspects which one looks into. फंडामेंटल में दो एस्पेक्ट आते हैं, वन इज क्वालिटेटिव, वन इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव पे हम लोग बाद में आते हैं, आई जस्ट टेल यू क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। एंड क्वालिटेटिव बहुत सब्जेक्टिव है, माने ये एक्चुअली ना कुछ कुछ लोगों के पास इसका एक्चुअली स्किल होता है, सो इफ यू हैव दैट स्किल इन यू देन इट वुड बी रियली हेल्पफुल। माने क्या होता है कि यू शुड हैव द स्किल टू जज अ पर्सन। जैसे कि कोई कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, आप उसका इंटरव्यू सुनो, इंटरव्यू पढ़ो, या आप है ना कहते उनका मैंने लाइफस्टाइल देखो। सो वो आप बैकग्राउंड देखोगे ना, उससे आपको बहुत कुछ मैनेजमेंट के बारे में आइडिया मिलता है। एंड समहाउ मैनेजमेंट का बैकग्राउंड ना आपको बहुत कुछ कंपनी के बारे में बताता है। सो एज आई सेड, इट्स अ स्किल जो कि धीरे धीरे डेवलप होता है। द मोर यू आर एबल टू रीड अ पर्सन, आप है ना कहते इसमें मास्टरी कर पाओगे। सो मैनेजमेंट को जज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बिजनेस एथिक्स कैसा है, आपको एथिक्स ना, अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे या आप है ना कहते वो इंटरव्यूज वगैरह भी पढ़ोगे ना, या मैनेजमेंट का आजकल तो टीवी चैनल्स पे इतने से मैनेजमेंट आता है, आप सुनोगे, सो यू विल गेट टू नो कि उनका है ना कहते लैंग्वेज से आपको समझ में आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ एथिक्स डू दे फॉलो। एंड माने वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स में बिलीव करते हैं कि दे रियली लाइक वांट टू क्रिएट वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स। एंड उनका जो बिजनेस का पूरा जो गोल होता है दैट इज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड। तो वो आप है ना कहते हैं उससे बिजनेस एथिक्स का थोड़ा बहुत आपको है ना कहते हैं ध्यान देना पड़ता है। सो बैकग्राउंड हो गया, एथिक्स हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वेदर लाइक they've been involved in some kind of fraud or not, वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। सो इफ यू dig deeper in गूगल अगर आप करोगे ना, आपको काफी कुछ मिलेगा, whether the management has been involved in some kind of लीगल केस और नॉट। तो वो थोड़ा सा बैकग्राउंड सर्च करना पड़ता है। और अदरवाइज कुछ भी लाइक डू दे हैव लॉट ऑफ थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस और नॉट, उससे भी काफी कुछ आपका आइडिया लगेगा कि है ना कहते दे डोंट डू लाइक इधर उधर है ना कहते मनी ट्रांसफर केवल नहीं हो रहा है ना। सो थर्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इंटरनल शेयर ट्रांजैक्शंस, ये सब से भी काफी कुछ आइडिया मिलता है। फिर व्हाट काइंड ऑफ सैलरीज आर पेड टू द प्रोमोटर्स, अगर आप एनुअल रिपोर्ट खोलोगे उसमें बराबर पूरा डिस्क्लोजर रहता है प्रोमोटर्स को क्या सैलरी मिल रहा है। सो इट शुड बी अ लेजिटिमेट परसेंटेज ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट। तो अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे आउट हो रहा है, सो देन दैट्स नॉट अ गुड साइन। तो आपको है ना कहते हैं ये सब कुछ कुछ माइनर चीजें हैं जो कि आप है ना कहते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, you would get lot of idea about the quality of that company। फिर वही अगर कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है कि नहीं है। सो दैट इज लाइक another thing which I mean the companies really take help of. For example, in case of infra companies, the capital goods companies, you because they are more dependent on the government and also you would find those companies would be having some connection to some political party or influential person, because उनके बिना उनका काम ही नहीं होता है। So if like for example currently BJP is in power, so अगर कंपनी का उनके साथ अच्छा रैपो है, अच्छा एफिलिएशन है, so definitely कहीं ना कहीं they benefit out of it। So ये सब एंगल्स भी थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। एंड हाँ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है कि नहीं है ये सब, because like mid cap small caps में many times it happens कि it's a operator driven stock। तो फिर वो सब stocks है ना लॉन्ग टर्म के हिसाब से कभी है ना रखना ही नहीं चाहिए। these are like because इनका फिर कैसा था बहुत शार्प आपको राइज भी दिखेगा एंड उतना ही शार्प फॉल भी दिखता है। so you should stay away from such kind of stocks at least from a long term perspective। आप शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली होल्ड करो, उससे बेनिफिट करो, बट देन नॉट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म perspective। So these are some of the qualitative aspects जो कि आप है ना कहते हैं इंटरव्यू से, न्यूज आर्टिकल से, या है ना कहते हैं हर क्वार्टर के एंड में मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल होल्ड करता है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट भी अवेलेबल रहती है बीएससी के वेबसाइट पे। तो ट्रांसक्रिप्ट से, एनुअल रिपोर्ट से आपको ये सब का काफी कुछ आइडिया मिलेगा। आप उनको पढ़ भी लोगे ना
तो यू वुड गेट लॉट ऑफ आइडिया अबाउट कि मैनेजमेंट क्या सोचता है, उसका विजन क्या है। फिर आप आओगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे, आप पहले क्वालिटेटिव स्टडी करो। क्वालिटी वाइज अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट साउंड है, मैनेजमेंट अच्छा है, उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी स्ट्रॉन्ग है एंड उसका लॉन्ग टर्म विजन है, इफ यू आर रियली कंफर्टेबल विद द मैनेजमेंट विद हिज थॉट प्रोसेस, देन फिर आप क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ मूव करो। नाउ व्हाट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट? उसमें हम फाइनेंशियल नंबर स्टडी करते हैं। सो देयर आर थ्री बेसिकली स्टेटमेंट्स दैट वी स्टडी। तो मैं आपको बताती हूँ, द स्टेटमेंट्स आर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी क्वांटिटेटिव फैक्टर आपको Everyone, just wait for just 2 to 5 minutes. Due to some technical glitch, ma'am is unable to join the session. Just wait for 2 to 5 minutes.
Yeah, sorry friends, I got disconnected. So I'll just quickly, briefly once again, just cover up the qualitative aspect. So as I mentioned, कि qualitative aspect में management को study करना is very important. Management का background, उसका lifestyle, how is he connected to the politicians and all, and what kind of salary does he draw. So ये कुछ key parameters है जो कि अगर हम study करेंगे, we'll get to know what kind of मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है एंड उसका लॉन्ग टर्म विजन कैसा है and whether does he really think about the shareholders, does he really have a long term vision for the business, or it's he just wants to make quick money kaise bhi karke. So it's an art which you will develop over the time, but then qualitative aspect अगर आप है ना कहते अच्छे से समझ पाओगे ना, तो financials अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी समझ में आए, अगर आप मैनेजमेंट को अच्छे से स्टडी कर पाओगे तो काफी कुछ हेल्प करता है आपको अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में. वंस आप है ना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट स्टडी करके आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लेते हो, देन वी मूव ऑन टू क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. सो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज बेसिकली कि हम फाइनेंशियल नंबर्स को भी स्टडी, वेरिन है ना कहते आप है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी एनालाइज कर दो, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड उसके बाद आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आपका आंसर करता है क्वेश्चंस लाइक रेवेन्यू एंड इट्स ग्रोथ, कि आपका अर्निंग्स का ग्रोथ कैसा है एट द ऑपरेटिंग लेवल, व्हाट इज द काइंड ऑफ मार्जिन्स द कंपनी इज मेकिंग एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ. ऑपरेटिंग लेवल हो गया कि आपका प्योर ऑपरेशंस के थ्रू क्या बिजनेस जनरेट कर रहे हो. देन फिर आप वेदर द कंपनी हैज अ प्राइसिंग पावर और नॉट, हाउ गुड इज द कंपनीज डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, वेदर वो कैश जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है फ्रॉम इट्स प्योर operations of the business, what kind of debt levels are there in the books, working capital management kaisa hai. So these are few questions which are answered through the quantitative aspect, which will dig deeper. Next अगर अब हम move करें तो source क्या है. So qualitative और quantitative दोनों का ही मैं सोर्स बताती हूँ. जैसे क्वालिटेटिव का आई टोल्ड यू मैनेजमेंट इंटरव्यूज, एनुअल रिपोर्ट्स, कंपनी का प्रेजेंटेशन, देन क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स. इससे आपको काफी कुछ है ना देखते क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पता चलेगा. या फिर इफ यू डिस्कस इट विद द सप्लायर्स और द वेंडर्स और अदर द कंज्यूमर्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स, अगर आप उनसे बात करोगे, so you would get to know a lot about the qualitative aspect. Talking about quantitative aspect, the annual report is the best for all the information. To support to it, आप conference call transcripts देख सकते हो, जो कि almost many companies conduct conference call post their quarterly results. So वो जो transcripts होती है BSC website पे upload होती है, and that's a very good source about digging deeper into अभी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है एंड आगे व्हाट इज इट, कंपनी का विजन क्या है, व्हाट इज इट ट्राइंग टू रियली डू. तो कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट से काफी कुछ आइडिया मिलता है, कंपनी का प्रेजेंटेशन से मिलता है. देन इफ यू लुक इनटू द कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट, तो था बहुत आप उनसे भी ना कंपैरिजन करके कुछ एनालिसिस कर सकते हो. देन इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंडस्ट्री की वेबसाइट्स काफी अवेलेबल है इस बार, तो आप उनमें जाके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. So these are some of the sources for the analysis. Now, in the annual report, अभी आप सोचोगे कि इतना बड़ा annual report, it's not possible for us to go through the entire annual report. So obviously you don't need to go through the entire annual report. The key sections which are really important, एक उसमें वो section होता है financial highlights. यहाँ पे very briefly for the past year कैसा company ने perform किया and what was the reason behind it, वो आपको summary में मिलता है. Then there is chairman's message, which will give you chairman का vision क्या है. So वो vision के लिए आप chairman message पढ़ो. Management discussion, ये same exercise कहते within the industry आप है ना कहते two players के बीच में करके देख सकते हो to pick and choose which one is the better. So for example, and so three activities say whether the company has been able to so what are expenses, वो
है ना कि 1x टाइप हो 1x 2x के बीच में हो, देन